Hello everyone, welcome back to our channel that is Govt Drish. We provide you with the details of the competitive exam syllabus and this is our series that is Lucent series of general knowledge. हाँ, यहाँ पे आपको competitive exam से related सारे general knowledge के जो important facts है या हमने इसको literary वे में आपको समझाने के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट किया है वेयर वी प्रोवाइड यू विद द ऑल द डिटेल्स। जैसे कि हमने कवर कर लिया है ऑल द सिविलाइजेशंस ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड नाउ वी आर इन आवर मिडिवल इंडिया और इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा मॉडर्न इंडिया यूरोपियन रेवोल्यूशन के बाद से। तो चलिए आज जाते हैं मराठा कॉन्फेडरेसी के बारे में एंड दिस इज़ आवर पार्ट 24 ऑफ ल्यूसेंट सीरीज जनरल नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो ये जो मराठा कॉन्फेडरेसी था ये था टाइम पीरियड फ्रॉम 1720 टू 1818 तक और इनके जो रूलर्स थे यू कैन से इट वाज फर्स्ट बाजीराव वन और इनका टाइम पीरियड था 1720 टू 1740 तक। सो ही हैड was the eldest son of बालाजी विश्वनाथ एंड देन ही सक्सीडेड हिम। उनको हेरिडिटरी जैसे सक्सेशन होता है फिर वो पेशवा बन गए। दैट वाज एट द एज ऑफ 20। नाउ ही वाज आल्सो कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्ला टैक्टिक्स आफ्टर शिवाजी एंड मराठा पावर रीच इट्स zenith अंडर हिम। सो इनको गुरिल्ला टैक्टिक्स का मतलब अच्छे से ये लोग ये जानते थे बोल के ये फेमस थे और इनके अंडर ही मराठा पावर हैड रिसीव्ड ग्रेटेस्ट पॉइंट आफ्टर शिवाजी। मराठा फैमिलीज भी प्रोमिनेंट हुए, बहुत रिच हुए, लाइक दे वेर सेटल्ड, दे वेर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, सो द थिंग्स व्हिच आई एम मार्किंग दीज आर इम्पॉर्टेंट। guerrilla tactics, who was known for guerrilla tactics under Maratha Confederacy, it will be Bajirao I. Then prominent means they were in different parts of India, they traveled, they settled in different parts of India, they got much acknowledged. Okay, now after defeating and expelling the Siddhis of Janjira, सिद्धीस और जंजीरा उनको डिफीट करने के बाद उनको हराने के बाद कहाँ से मेन लैंड 1722 में उन्हें क्या कॉन्कर किया, पसेन, सालसेत फ्रॉम द पोर्तुगीज़। ठीक है, एंड दिस वाज द टाइम पीरियड। तो सिद्धीस को हरा के ही कॉन्कर दिस टू थिंग्स फ्रॉम द पोर्तुगीज़। From the right hand side please notice the kingdom and the territories have been given. The Sindhia, the territory was Gwalior, the Holkar, Indore, Pawar. These are the present day names. Okay, so these are the present day names, and these were the earlier kingdoms. Now he had also defeated Nizamul Mulk, जो भोपाल में पास था, and he had also concluded this treaty. This is very important. That is Dora Sarai. And what happened in this treaty? Please remember what happened in this treaty. Like it can come in the questions in the form of very short. That what happened in this treaty? Just 2 words is enough. So you have to remember what happened in each treaties. So here he had got Malwa and Bundelkhand from the latter. That was 1738. Now what happened? He had led him successful expeditions, मतलब conquest, conquer करना कौन से साइड में, नॉर्थ इंडिया में. So where and this conquest had helped to weaken the Mughal Empire as well. Mughal Empire इन्हीं conquest के वजह से बहुत weak हो गया था और इसी वजह से Marathas also became the super power. Like वो भी जो इंडिया में उनका रूल भी बढ़ा. Now what they used to say that let's us strike at the trunk of the withering tree and the branches will fall on themselves. तो नॉर्थ इंडिया में सक्सेसफुल एक्सपीडिशंस मुगल्स के थे तो उन्होंने ऐसा बनाया कि ठीक है हम लोग उनके ट्रंक में हमला करते हैं ताकि वो जो साउथ या दूसरे साइड्स में है मुगल्स वो श्रिंक हो जाए. Now we had Balaji Baji Rao, that was in 1740 to 1761 and he was known as Nana Sahib. ठीक है, और इन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया only at the age of 20. Now after the death of Shahu, that was 1749, जो सारे स्टेट अफेयर्स के मैनेजमेंट थे वो सब बालाजी बाजी राव के हाथ में दिए गए. सो एक एग्रीमेंट हुआ उनका मुग़ल एम्पर अहमद शाह के साथ जो थे तब के emperor. Now what had happened, the Peshwa was to protect the Mughal Empire from internal external enemies in return for चौथ. तो अगर पेशवा को चौथ चाहिए था तो उनके बदले में he had to protect the Mughal Empire. ठीक है,
इवन एक्सटर्नल एनिमीज, जैसे कि तब अहमद शाह के एक्सटर्नल एनिमी थे अहमद शाह अब्दाली. So फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी इनके अंडर ही हुआ. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अंडर विच मराठा रूलर डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ऑकर. ठीक है, और ये था डेट. और ये मराठास को डिफीट किया किसने, अहमद शाह अब्दाली ने. और इसके वजह से विश्वास राव का भी डेथ हुआ एंड सदवेश राव का भी. ठीक है, ये दोनों का. एंड दिस इवेंट से शॉक पैदा हुआ वो सारे जो पेशवा बाजी राव थे. एंड even what happened is that after this event it was a shock for him, and after 6 months he also died. So this battle ended the Maratha power. यही था मराठा पावर का जो डिक्लाइन का रीज़न. बालाजी बाजीराव के सक्सेसर्स थे माधव राव, नारायण राव, स्वामी माधव राव एंड बाजी राव टू. Now Anglo-Maratha Wars. What were the Anglo-Maratha Wars? So this first Anglo-Maratha War, let's see. ये था रघुनाथ राव के फेवर में फॉर द पेशवाशिप. और ये जो इंग्लिश थे, जैसे कि इंग्लिश के जो इसी द कंपनीज यू कैन से दे केम इन कन्फ्लिक्ट विद द मराठास. नाउ ऑन बीइंग डिफीटेड, जैसे कि ब्रिटिश हार गए, दे हैड टू साइन द ह्यूमिलेटिंग कन्वेंशन ऑफ वैटिकन. ठीक है, इसमें ब्रिटिश हार गए थे. फिर ब्रिटिश ने और भी एक साइन किया बाद में, ट्रीटी ऑफ सलबाई, जिसमें वो राघोबा भी रिनाउंस कर दिया, छोड़ दिया था, उनके हवाले कर दिया. नाउ सेकेंड मराठा एंग्लो-मराठा वॉर, पेशवा साइन सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी ऑफ बसीन. ठीक है, तो कौन से मराठा वार में कौन से ट्रीटी हुआ था एंड इन विच ईयर, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड रिगार्डिंग मराठा पावर, मराठा इज़ ऑलरेडी अ वेरी इंपॉर्टेंट एम्पायर एंड अ प्रोमिनेंट टॉपिक इन द history of UPSC, BPSC or other such a competitive exam. So please go through this topic very leniently. Now, so then what happened, the Maratha Confederacy, they did not like the idea, so they challenged the British power, but challenge करने से कुछ अच्छा नहीं हुआ. they were defeated by them. अब जानते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में. यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे, उन्होंने ब्रिटिश पैरामाउंसी इन इंडिया में डिक्लेयर कर दिया. देन ऑल्सो पिंडारीज के अगेंस्ट गए. देन सॉवरेनिटी ऑफ मराठा चीफ्स एंड देन वॉर बिगैन. बट दिस वॉज ऑलरेडी द एंड ऑफ द मराठा, सो दे वर डिफीटेड. तो ये था मराठा कॉन्फेडरेसी के बारे में. सो if you want more details regarding the Maratha Empire, go through our last chapter series, that was series 23. Now we'll just give a glimpse of the advent of the Europeans in this series, and we will continue with this in our next series as well. So these were the companies that had arrived, and these were the establishment dates, and this were their headquarters. Okay, Portuguese East India Company, English East India Company, which is more famous and important. Then Danish East India Company, French East India Company. Now let's know about the Portuguese. They were discovered from India to Europe to India by Vasco da Gama. This is a very common point. And when he had reached the port, that was Calicut, this was the date, and he was received, like someone had received, a Hindu ruler received of Calicut. Okay, and then he was known by the title of Zamorin. Then through this, the trading stations of the East India Company that started शुरू हुआ कैलिकट में, कोचीन में, कनानॉट में. पहले कोचीन वो कैपिटल था पोर्तुगीज़ का इंडिया में, लेकिन बाद में गोवा कैपिटल बन गया. सो ये था फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज़ का नाम, दैट वाज फ्रांसिस्को द अल्मीदा. देन ही वाज आल्सो इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर. फिर जानते हैं अल्फोंसो द एल्बर्ट के बारे में, जो था सेकेंड. तो इन्होंने ये पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म इंट्रोड्यूस किया. दैन वी हैड नियो ना सुना, उन्होंने ट्रांसफ़र किया कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा. एंड देन बहादुर शाह गुजरात भी इन्होंने ये एक्योर किया. ओके, सो देन मार्टिन अल्फोंसो de Souza, ये लोग थे फेमस जेसुइट. देन वी हैड पोर्तुगीज़ पावर, उन्होंने डिक्लाइन भी हुआ, दैट वाज इन द 16th century. Then they lost Hooghly in 1631 after being driven out by Qasim Khan. Then the King of Portugal gave Bombay to Charles II of England as dowry when he married the former's sister. ठीक है, so ये सारे points थोड़े important है, you can just refer to it. Now the Marathas had also captured Salsette and Bassein in 1739. This was even talked about in the last Maratha Confederacy, so please connect the dots and remember. And what happened in the end? They were left only with Goa, Diu, and Andaman, which they retained in 1961. So this was all about Portuguese, how they have evolved. So this was just a touch of the, you can say, the advent of the Europeans. I will continue with this in our next series. So stay tuned, keep watching us, and keep liking and sharing our videos as well. Take care.
And do not forget to watch us on a regular basis because we bring to you all the details.